अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों को, दोस्तों को। आज हमारी जूम मीटिंग नंबर 17 मुसलसल लॉकडाउन के दिनों में 1 by 1 वी आर इम्प्रूविंग और बड़े अच्छे तरीके से बड़े अच्छे गेस्ट स्पीकर हमें ज्वाइन कर रहे हैं डेली। और हमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम दोस्तों को ऑनलाइन लेके सब दू बदू आपस में बातें भी करते हैं जितना। और ये एजुकेशनल प्रोग्राम भी है, वो हमारी पेट्स हो चुकी है और वी आर एट द स्टेज ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट असेंबली। तो उसके लिए ये है कि आप लॉकडाउन में बैठे हैं, तो मैं वेलकम कहता हूँ। सलीम रज़ा हमारे लीडर भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, तो इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को आज कबूल किया। और हमारे साथ पीडीजी वीर आरिफ अली हैं और सलीम पीडीजी सलीम राव भी 3271 से ज्वाइन कर गए हैं। और जैसे जैसे लोग आते रहेंगे मैं सबका इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त चंडीगढ़ से मेरे साथ हैं, मैं इनको भी वेलकम कहता हूँ। हमारे दोस्त जो बांग्लादेश से हैं, तो अब बाकायदा मीटिंग शुरू करने के लिए मैं तलावत के लिए आसमा को कहूँगा जी के तलावत की। इजाजत है जी। जी बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثم يجزاه الجزاء الأوفى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से इब्तिदा करती हूँ जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। ये कि कोई शख्स किसी के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा और इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की, और अनकरीब उनकी कोशिशें देखी जाएंगी और उन्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله. जी बहुत जबरदस्त माशाल्लाह आपने तलावत की है. तो मैं फॉर्मली आई वेलकम टू ऑल आवर distinguished guest today here. PDG Salim Raza is here और हमारे साथ मैं आपको कंफर्टेबली सारा उर्दू इंग्लिश में मिक्स करके सबका इंट्रोडक्शन कराऊंगा. PDG जैनुल आबिदीन इज हियर. सर वेलकम. और हमारे साथ PDG अनीसुज़्ज़मा इज हियर जिनको मैं अभी देख रहा हूँ. वेलकम सर आपका भी आने का हमारे बांग्लादेश से. और हमारे साथ और हमारे हसन शेख हसन जो नाम मेरे पास आ रहे हैं. नूरुल कबीर डिस्ट्रिक्ट 3281 बांग्लादेश. मैं इसी तरह सबका नाम लूँगा. हमारे साथ हमारे PDG सलीम राव 3271 से हैं और PDG और ऐसे हमारे साथ PDG साजिद परवेज भट्टी साहब बैठे हैं. और हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत सीनियर लोग हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो मैं सबको जिसको देखता जाता हूँ. हमारे सर आपको you are comfortable, you can understand what I'm talking. Salim bhai, every day we are doing Zoom meeting. This is because to connect the people, connect my Rotarians, because as you teach me, leader never sleeps. तो हमने इस बात को ज़हन में रख के अपने लॉकडाउन में during our lockdown, you know, we are trying and every day our district leader, they are coming and we are discussing every day different subject. So today we welcome you with the all distinguished PDGs from Bangladesh, from India. We have Anila Brai, my friend from India, Chandigarh, and our some friend which I will recognize, Mir Anisuzama. इनको भी वेलकम. और इसके बाद I will invite Mir Arif Ali to say something. PDG Mir Arif Ali. Sorry? Ji, formal introduction of our guest. Thank you, sir. Honorable guest speaker, past district governor Salim Raza, moderator DG Tazim, galaxy of present and past district governors, fellow Rotarians from home and abroad, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. I am grateful to my DGE Tazim Ahmed for having given me the honor to introduce past district governor Salim Raza, our guest speaker this evening, which is a great honor for me, and who will speak on current challenges. I will now share a brief resume of PDG Salim Raza. PDG Salim Raza is a member of the Rotary Club of Khulna, District 3281, Bangladesh. His classification is manufacturing jute goods. He did his MBA from the Indiana State University, Bloomington, Indiana, USA. After completing his studies in the USA, he came back to Bangladesh and joined his family business in 1985 and is the chairman of Nishong Jute Mills Limited, where more than 3,000 workers are employed. He joined Rotary Club of Dhan Mandi, Dhaka as its charter joint secretary in 1985. He became president of Rotary Club of Khulna in 1994-95 and district governor in 2005-2006. He has been district trainer in 2007-8 and has served on various club and district committees. On the international level, he has served on various committees from 2004
to 2020. He has been vice chairman of various zone institutes and has represented RA president representative in various countries. He has also served as Rotary coordinator for Zone 6B and has been a member of Governor-elect training seminar training team several times. He is a major donor level 4 and has received the RA Service Above Self Award. He has also received the Rotary Foundation Citation for Meritorious Services in 2008 and Distinguished Service Award by TRF in 2014. He is married to Selina Raza and is blessed with one son, Shahab Raza. Now, ladies and gentlemen, I present to you PDG Salim Raza. Thank you, Welcome. Arif Bhai. Assalamu Welcome, alaikum to everybody. Okay, welcome PDG Salim Raza. Now this is your time and your current subject is to current challenge. And please introduce all guests from Bangladesh, which I don't know the name. Please, Salim Raza. Thank you very much, DG Kazim and Mir Arif Ali, my good friend, who have introduced me. हमको जो आपका साथ मुलाकात कर लिया दिया, तो यही कोरोना ने यही एक चीज हम लोग को दिया, अच्छा चीज जो at least we can meet and we can see and we can discuss our matters. Right Okay, now, sir. the whole world. Yes. Yeah, you can carry on, please. Anything problem? No problem, Okay. sir. Carry on. जो चीज हम लोग अभी जा रहा है, दुनिया होल दुनिया जा रहा है, हम लोग रियली वी आर इन डेंजरस पोजीशन. खास करके जोन 1B जो नेक्स्ट ईयर से हो रहा है, आ रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के लिए, ये जोन नई जोन हो रहा है. इस जोन के लिए एक चैलेंज और भी ज्यादा है. अभी तो हम लोग देख रहा है क्या हो रहा है, मगर द आफ्टर इफेक्ट ऑफ दिस पेंडेमिक, आई डोंट नो वेयर वी विल गो. सो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट फ्रॉम नाउ ऑन. लाइक रोटरी इंटरनेशनल हम लोग को दिया, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होना था, पाकिस्तान आप पेश कर लिया, बांग्लादेश अभी तक पेश नहीं किया. सो दिस ईयर आई डोंट नो आप लोग ये कर सकेगा और नहीं कर सकेगा, मगर क्लब तो चलना पड़ेगा, रोटरी तो चलना पड़ेगा. अगर रोटरी नहीं चलेगा तो ये जो आम आदमी है इस लोग को तो डिसीव्ड हो जाएगा. आप देखिए ना, ये कोरोना में भी रोटरी सबसे आगे आ गया, पहले आ गया. सो वी हैव टू सर्वाइव for the people. At least for the people, Rotary have to survive. And to survive the Rotary, the leaders of the Rotary have to be prepared for themselves to tackle this situation. So, आ जाएगा. पहले जो चीज हम लोग का दिमाग पे आ रहा है, इस सिचुएशन में मेंबरशिप का क्या होगा. अभी तो चल रहा है पेंडेमिक, हम लोग मुलाकात नहीं कर सकेगा, ये वर्चुअल मीटिंग चल रहा है, बट ये कितना दिन चलेगा, ये मेंबरशिप कहाँ जाएगा. ये इतना करेक्ट टाइम में भी मेंबरशिप नीचे जा रहा था, अभी ये क्या होगा. सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, क्या होगा. TRF कंट्रीब्यूशन अभी तो बचना ही मुश्किल हो गया. TRF कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा. वी हैव टू थिंक अबाउट दैट आल्सो, बिकॉज़ without that we cannot, our foundation cannot survive, and whatever we are doing, we cannot do this thing. So if we cannot do all these things, there is no meaning of Rotary service. So we have to think about these two things. And as I said, that this zone, 3 country. You देखो coincidentally, 3 countries is the Muslim country, Islamic country, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia. And जो 10 दिन बाद रमजान आ रहा है, ये रमजान में क्या होगा, ये कोरोना कहाँ ले जाएगा हम लोग को, ये भी एक बिग फैक्टर आ गया. इसका साथ चल रहा है
we are talking about lockdown, 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 lockdown. But do you think that we are doing lockdown strictly? I remember one thing, the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, said, no way that Pakistan can do the lockdown. No way. In real meaning, the Pakistan cannot afford the lockdown because the population is 20 crore. इसमें 25% लोग हैं जो daily खाता है, daily workers. How can, if there is a lockout, really in the real sense, real meaning, how I can afford these 5 crore people को हम खिलाएगा? So the challenges are really big, and we have to tackle these situations with the government of the countries. So I think the Rotarians जो पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, इंडोनेशिया में भी है, हर दुनिया में भी जो जहाँ है, हम लोगों को as a leader, Rotarians are known as a leader. So we have to prepare ourselves, our strategy and everything so that we can tackle these things. I'm very glad that Pakistan Rotary, I can see from the Facebook, I can see from your virtual meetings, I can see from everything that both the districts are doing fantastic jobs, especially 3272 is really doing very good. So my congratulations to the leaders of the Pakistani Rotary, and I appreciate your all decisions that you are taking. I can see that you have talked with the directors, you have talked with the president, we have talked with the president-elect, and you are going further. So my wishes are with you, but still I will tell you that कुछ चीज है हम लोग को अभी से सोचना पड़ेगा. अगर हम लोग अभी से नहीं सोचेगा तो the time will be very difficult for us. अगला आने दिन वाला. So Tazim, your time is will start after 2 months. So you have to prepare. You don't know how you have to start, but from where you have to start and what you will do in front of you. Now it is a total whole sky is there. So you have to fly in this sky, and इसलिए आपको preparation वैसे ही लेना होगा. आप हम लोग ये training program करके भी club को it was very difficult for us that clubs were not properly doing things, but still now that you have still 2 months time. In these 2 months, you have to prepare your all clubs. Like if you think about the membership crisis, hoga, but you have to keep on trying that the good you recruit the good members and you are giving them the proper orientation so that they can stay back in the Rotary. They knows what is the benefits of Rotary. Don't bring just say हम सब हर वक्त बोलता है Rotary सबके लिए नहीं है. Rotary is only for the leaders. आम जनता के लिए Rotary नहीं है. आम जनता is the beneficiary. Leaders are the should be the Rotarians. So हम लोग को जब हम लोग pick करेगा, recruit करेगा, वही टाइम में हम लोग को सोचना पड़ेगा जो we should pick up the correct person to be in the Rotary, who can lead us, who can use his resource to spend, to tackle the situations. और हम लोग wrong आदमी को आनेगा, वो गलत सोचेगा, चला जाएगा, Rotary का बदनाम होगा. So to keep the membership straight, we have to pick up the correct persons. दूसरा चीज है, देखिए, we are always thinking about in the contribution, annual giving. Now the situation came like this. Where you will get the people to contribute in the annual giving? खाने के लिए तो पैसा नहीं है. Annual giving में कैसे देगा? मगर हम लोग को सोचना पड़ेगा कैसे ये situation overcome करना पड़ेगा. यह भी करना है. But the best thing is that I will tell one thing, that please try to contribute in the endowment fund. This is the future of Rotary. That is the future of Rotary. If the annual giving is the present, endowment fund is the future of the Rotary.
In my district, we have 3 endowment fund. And from these 3 endowment fund, every year our district is getting $5,000 to $6,000 DDF. Every year. It's immaterial how much we pay in the annual giving or not. Suppose this year, pandemic 6 months रहेगा, so where the contribution will come in the annual giving. So if there was a endowment gift, endowment fund, your district is secured. If you have a 25, 6, 30 endowment gift, still your district can have a DDF of 40,000, 50,000, which you can spend on your own wish. You don't have to ask from the Rotary International for this, for where I will spend this money. You can designate yourself for this endowment fund, named endowment fund. Third is that, as I said, that this zone 1B will be a unique zone from next July. This is the 3 countries get together in the name of a Muslim. We cannot deny that. These three countries are the Muslim countries. And after 10 days, the Ramadan will start. And I don't know how we will face this situation in this Ramadan with these poor peoples who have in this lockdown position, who cannot get the work, how they will do this thing, Siam, I don't know. So we have to stand with them. So my friends, I will request आप लोग को please थोड़ा सोचिए, ये हम लोग को as a Rotarian, we are here to think about those people and to do something about those people. And my urge is that from now on, let us start in Rotary with the Rotarians that we must establish a permanent Zakat fund in the Rotary from the part of every Rotarian. They should put there and which we can spend for these purposes. Until now, I have talked about these things. So if you have any specific question, you can ask me. I will give you the answer. Tazim, okay? Yeah, thank you very much, sir. You have given exact situation of the time. हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, बिलाशुबा ये एक बड़ा मुश्किल दौर है. We have to fight. So thank you so very much. I will ask PDG Salim Rao just to say something. Salim Rao from 3271. जी अस्सलाम वालेकुम ताजिम भाई. जी सोना सर फ्यू. अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई. सबसे पहले तो मैं वालेकुम सलाम सलीम भाई. थैंक यू वेरी मच. Greetings from District 3271 and 3272, Pakistan. We are very thankful to you that you have joined us in our zone meeting. मैं सलीम भाई को लिए थोड़ा सा जरूर बात करूंगा कि इत्तेफाक से मेरा ख्याल है जो मेरी अपना था कि ये लास्ट जो टूर इनका विजिट था पाकिस्तान में वो 27 अगस्त को जो है कराची था. मैं उस टाइम गवर्नर था और इनका जो है वो ये उस टाइम आरसी रोटरी कोऑर्डिनेटर थे और जोन 6 भी के मेंबरशिप डेवलपमेंट सेमिनार था. I still remember the visit of Nawab Shah. Yes, चीफ गेस्ट. लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि सबसे पहले जब इन्होंने मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा 5 मिनट, लेकिन मुझे वो यादें वो बातें जरूर याद रहती हैं इनकी कि बहुत अच्छे, बहुत हम्बल, बहुत कमिटमेंट के पर्सन. तो मेरे साथ इन्होंने वहाँ अपने मेरा जो है प्रोग्राम किया मेंबरशिप डेवलपमेंट सेमिनार. मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मैं जब से मैंने 1 जुलाई से जब चार्ज लिया था अपना एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, तो मैं अपने क्लब में होम क्लब नवाबशाह नहीं गया था, मैं कराची में ही था. इंस्टॉलेशन सेरेमनी की और उसके बाद जो है ना मैंने ये मेंबरशिप डेवलपमेंट सेमिनार किया. तो मैंने कहा कि एक इंटरसिटी मीटिंग रखते हैं आपके ऑनर में. और 50th एनिवर्सरी था क्लब का. जी 50th एनिवर्सरी था. वेरी गुड, बिल्कुल सही. 50 साल मेरी तकरीब थी क्लब की भी, और मैं अपने गोल्डन जुबली गवर्नर था अपने क्लब से और फर्स्ट गवर्नर था रोटरी क्लब नवाबशाह से. तो मैंने इंटरसिटी मीटिंग रखी. तो मैं जो एक्चुअल बात बताना चाह रहा हूँ, चंद बातें
कि मेरी गाड़ी इत्तेफाक से एक दिन पहले ही उसी दिन रात को एक्सीडेंट होगी, तो मैंने दूसरी गाड़ी को अरेंज किया। तो उस दिन जब हम नवाबशाह के लिए निकलने लगे तो बारिश हो रही थी, तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी। मैंने अपने बेटे की गाड़ी कल्टस ली और मैंने एक और दोस्त को कहा कि यार आप ले आओ गाड़ी। तो गाड़ी वो आई नहीं, लेकिन सलीम साहब ने कहा कि यार यू डोंट वरी यार, हम इसी में चलेंगे, कल्टस में चलेंगे, कोई मसला नहीं, डोंट वरी। मुझे बड़ा जो है अजीब सा फील हुआ। हम नवाबशाह के लिए निकले, रास्ते में इत्तेफाक से हैदराबाद के करीब जो है ना रोड ब्लॉक था, तो हमें जो 4 घंटे में सफर तय करना था, हमने तकरीबन 6-7 घंटे में सफर तय किया और दूसरे रास्ते से डाइवर्जन लेके हम नवाबशाह पहुंचे। हमने रात को इंटरसिटी प्रोग्राम किया, बहुत सारे क्लब थे, तकरीबन 40-50 क्लब ने वहाँ पार्टिसिपेट किया। वापस आए, उस दिन रात को हम नवाबशाह रहे और अगले दिन हम वापस आए। नेक्स्ट डे जो है सलीम साहब की फ्लाइट थी, इन्होंने कहा कि यार राव साहब मुझे कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी है मुझे। उस दिन संडे था, मार्केट बंद थी। राव साहब थोड़ा सा सब्जेक्ट के ऊपर आए, हमारे पास बहुत स्पीकर है अभी तक। सर मैं सब्जेक्ट पे भी आऊंगा, बस मुझे थोड़ी सी बात करनी थी। बस मैं बताना चाह रहा था कि वहां से जब हम आए तो सलीम साहब की तबीयत बहुत खराब होगी। अचानक मैं एक जगह, हम लोग शॉपिंग कर रहे थे और कार्ड से पेमेंट करने लगे तो ये बहुत बिल्कुल फ्लैट हो गए और बहुत मुंह से इनके पानी और जर्द रंग हो गया। मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने उसी टाइम अजीज मेमन साहब को रिंग की, वो बाहर चले गए। फिर मैंने फैज साहब को रिंग की, मैं बिल्कुल अलोन था, मैं और ये, और मैंने बड़ी मुश्किलों से संभाला। और मैं इतना कंफ्यूज था कि मैं इनको मतलब इन्होंने बस जब होश में आए तो इन्होंने कहा, कहने लगे यार मुझे वहां लेके जाए। तो मैं एयरपोर्ट तक छोड़ के आया। मेरे वो एक बड़ा टफ टाइम था और इन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छे मोहब्बत से गुजारा और बड़ा मैंने एम्बुलेंस मंगा ली थी, लेकिन मैंने इनसे पूछा कि यार आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए। इन्होंने कहा सलीम भाई मैं अगर हॉस्पिटल चला जाता तो वो मुझे एडमिट कर लेते और मुझे जाना जरूरी था, तो वापसी जरूरी जाना था, इसलिए मैं नहीं गया। कम टू द पॉइंट, मैं दूसरी तरफ आता हूँ। मुझे वो पूरा 2-3 दिन का इनके साथ जो एक सफर, एक जो थी चीजें बहुत हमेशा याद रहती हैं। इन्होंने 2-3 चीजों पे बात की, बहुत अच्छा मेंबरशिप के ऊपर और TRF पे। और तीसरी बात जो इन्होंने की कि 3 कंट्रीज जो हमारी अब नया जोन बनने जा रहा है 1B, वो तीनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। दैट्स वेरी गुड कि हम मतलब एक ब्लॉक एक हमारा एक मुस्लिम कंट्रीज का बना है। बिल्कुल हमें मेंबरशिप के ऊपर इंशाल्लाह हमारा जो है फोकस है और आइंदा भी रहेगा, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट 3 to 7-2 एक अच्छी मेंबरशिप होती है, एक अच्छी मेंबरशिप लेके चलते हैं। और इसी तरह TRF में भी इंशाल्लाह इस दफा जो खासतौर पे आने वाले टाइम है नेक्स्ट ईयर, गवर्नर साहब की जो अभी ताजीम को अगर आप देखेंगे, मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जितने एक्टिव है, जब लीडर एक्टिव होता है तो तमाम नीचे से प्रेसिडेंट भी एक्टिव होते हैं। बिल्कुल 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 और इनकी खास वजह बात यह है कि ये खुद एक्टिव है और जब खुद इन्वॉल्व होंगे, खुद एक्टिव होंगे, तो ना सिर्फ TRF मेंबरशिप, एवरीथिंग ही विल अचीव देयर टारगेट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच PDG सलीम राव सर। मैं चाहता हूं कि हमारे बांग्लादेश से काफी दोस्त ने ज्वाइन किया है और अगर सलीम रजा साहब अगर आप इंट्रोड्यूस करवा दें तो फिर हम आगे इसको आई डोंट नो कौन कौन किया। लेट देम। ओके, आई विल टेक PDG साजिद परवेज भट्टी। ये मुझसे ज्यादा सबको जानते हैं, तो ये विल इंट्रोड्यूस साजिद परवेज भट्टी। थैंक यू वेरी मच सलीम भाई। साजिद, मैं Salim bhai, welcome to Zoom meeting in our district 3272, and always pleasure meeting you since last when I was governor, and you were the first one who visited Pakistan at my district membership seminar, and it was really a great time to spend over there. So coming back to the introduction of the international Rotarians who are joining us on this Zoom meeting. So I'm watching on the gallery who are there. So Mr. Rotarian Muhammad Zainul Abedin, welcome sir. Today's Zoom meeting. And, he's from Rotary Club of Gulshan City. Currently he's staying in Canada. Yeah. And another very energetic Rotarian from the district 3281, my very dear friend Nurul Kabir. Welcome Nurul. And one more personality I have seen, PDG Nisuzama.
Where are you? I think He is from he's District 3282. from 3282. And Sheikh anyone Abdul else? Hashim is there. Oh yeah, Hashim. Welcome, Hashim. हमारे पास हाशिम है। Assalamu alaikum. This is Hashim from Walaikum. 3281 Rotary Club of Dhanmondi Central, Chartered President. Thank you, everyone. तो तमाम हमारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स को we Sajid, welcome you. I just got the message from Rudy Balmatar from Indonesia. He was supposed to join, but he missed the meeting. He cannot get in the Zoom meeting because I invited him to make it in the zone meeting, you know, Indonesia, Pakistan, and Bangladesh. But unfortunately, he missed the meeting. You can So- try again. Lines are open. Yeah, we have everyday meeting, Zoom meeting by our DGE, and a very energetic and dedicated Rotarian. And I think anyone from international Rotary who would like to join, please convey our meeting number and password to them. So we have every day at 8 p.m. To 9 p.m. meetings on different subjects, and we are now having guest speakers over there. So coming back to your speech, thank you very much. Your speech was really remarkable regarding our challenges, current challenges. तो मेरे ख्याल में करंट चैलेंजेस में जो आपने बातें की हैं वो बिल्कुल अप टू मार्क हैं इस वक्त। खास तौर पर मैं बांग्लादेश और इंडोनेशिया के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और पाकिस्तान के जो हैं, हमें मिलकर जो है वो आने वाले जो क्राइसिस हैं उस हवाले से रोटरी इंटरनेशनल से कोई स्पेशल जो है वो एक रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए, जिसके तहत जैसे सलीम रजा साहब ने कहा, तो मैं चाहूंगा कि ये उसके ऊपर भी एक्सप्लेन करें कि हाउ वी कैन गो ऑन इट, और हम इसको किस तरीके से जो है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर जो है वो एक जॉइंट रेजोल्यूशन टाइप भेजें, जिससे जो है हम मजीद ऐसी ग्रांट्स जो हैं डिजास्टर रिलीफ के हवाले से जो है वो no doubt के we got $25,000 each district who apply for that. तो इसमें भी मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा आने वाले रमजान के हवाले से कुछ जो पैकेजेस हैं कंट्रीज के हवाले से, उसमें भी कोई ऐसी पार्टिसिपेशन जो है वो स्पेशल फंड्स जो हैं वो करवाने चाहिए, ताकि इससे जो है हम जो कम्युनिटी का नो डाउट के हमारी डिस्ट्रिक्ट जितनी भी हैं वहाँ पर रोटेरियंस जो हैं वो अपने तौर पर रोटरी क्लब काम कर रहे हैं। तो इस चैलेंजेस को मीट करने के लिए हमें बहुत सारी एफर्ट्स, नो डाउट के दुनिया में चंद एक ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ये इशू है, तो उसमें वन ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें एक, और इंडोनेशिया और ये सारा जो एक इलाके हैं ये सारे उसमें शामिल हैं। तो हमें मिलकर जो है एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे हम लोगों को जो है पाकिस्तान और इंडोनेशिया और बांग्लादेश मैक्सिमम रिलीफ दे सकें थ्रू रोटरी। तो ये सेकेंडली जो चीजें इस वक्त हैं कि हमें बहुत सारा काम जो है वो कर रहे हैं, और जैसा सलीम भाई आपने बताया कि हमें अपनी गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम अपनी जो है वो लोकल अपने तौर के ऊपर जो है वो काम करें, बिकॉज दे नो वेल के जी किस चीज की किस एरिया के अंदर जरूरत है उसके ऊपर ही काम करना चाहिए। किसी को मेडिकल किट्स चाहिए, कहीं पर सैनिटाइजर चाहिए, कहीं पर जो है वो आपको राशन चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, स्पेशली जो रोटरी क्लब्स हैं वो अपने अभी चूंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट के, मैं तमाम रोटेरियंस को बताना चाहता हूँ कि डीएससी के पास अभी $25,000 जो आए हैं उसके ऊपर जो है अभी थोड़े दिनों में कोई मीटिंग गवर्नर साहब शायद कर लें, तो उसके ऊपर ये बताया जाएगा कि कहाँ पर ये फंड जो है हम यूटिलाइज करेंगे। और जो डीजीई ने अपनी प्रपोजल दी हुई है उसके अंदर ऑलरेडी वो ये है कि उसमें हर क्लब को उन्होंने कहा है कि इन्वॉल्व किया जाए, इंस्टेड ऑफ के डिस्ट्रिक्ट जो है उसको ओन करे सारे सिस्टम को। नो डाउट के रूटेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, बट इट शुड बी फ्रॉम द क्लब्स। तो सलीम भाई आप कुछ कह रहे थे। थैंक यू वेरी मच सजीद। पहले हम बोलेगा जो दिस इज अ वेरी गुड सजेशन दैट 6 districts of this zone, three countries, with the governors, current governors, to sit down with the DGEs, and they should make a plan for from now on to till the DGEs taking over,
So कैसे हम लोग ये सिचुएशन ओवरकम कर सकता है? पहले थिंग देखो, अभी तक we are confused with the way that the things are going around. So what to do? What to do? We are confused. So पहले चीज क्या है? क्राइटेरिया क्या है? अभी हमको जो देख रहा अंदाजा आ रहा है जो खाना पीना कैसे चलेगा? आदमी लोग तो काम पर नहीं जाना सकता, काम नहीं हो रहा है. So this thing will we should concentrate now on that one. You know, पहले कोरोना से तो पहले मरने के पहले तो खाना बिना फूड के मर जाएगा आदमी लोग. So we should concentrate our resource, limited resource, to that one. No, we have a very limited resource. $25,000 is nothing, you know, for one district. But that was the one thing that in the coming Ramzan, we should take some precautions, that we should help the people, poor people who are really in need. We cannot do the whole thing, but we can do the symbolic, start the symbolic thing, that in the whole these three countries, that we are doing for the people, for the feed the people, you know. And yes, still all the governors have some DDF left. I have talked with some Rotary International leaders that if we can, see, we don't need any international partner right now to have a global grant. Just don't need the 30%, $30,000, 30% participation. Without money, the international partner's name will be there. It can be happen. So let us three countries sit down together for the Ramadan month, and with the leftover DDF, they can do this thing, common thing, you know, same thing in the whole three countries. And we can show the path to the all other districts that if we work combinedly, we can do something. Okay, Yes, sir. Thank you, sir. It's a great knowledge to exchange with them. I want to recognize we have some other guests here. Dr. Adnan from District 30A30, DGN. Dr. Adnan 3030. So we welcome him. And also I can see Dr. Ruhela Anand Junjulwala. I would like to say, Dr. Anand Junjulwala from 3030. I would like to He was my aide this time when I was in 3030 as an RIPPL. Okay. Welcome everybody. And Ruhela Khan Chaudhary is a DGN from 3282. Welcome once again. And another lady, I can't see her name, but the number is 222. So you can see on screen. Hi, Anand. And hi. yes, and also I will recognize we have Mohsen past president, Khandakar. Yeah, she's a Dina. True, sir? And Yes. okay, and we have. Hello. I will Assalamu take alaikum. everybody. Dina. I will take. Walaikum assalam. Mansoor, Khandakar I Mansoor will from take Ghazipur. everybody for 1 minute each. And we have Syed Abdul Syed join us, and we have Hashim Sheikh. I would like to say something too. Go ahead, Janal bhai. Okay. Can I? Who has the floor? They are listening, Janal bhai, you go ahead. Okay. So assalamu alaikum to everybody again. I've been listening to the eloquent speaker from Bangladesh. I'm one of his, great fan, big fan. And he has eloquently said they talked about the organizational aspects of Rotary, but I liked one of the issues very
significant, particularly in view of the Ramadan, that establishing a zakat fund, which really deserves attention for all of us. This is one, I think, that can help us also generate lots of fund and then, get into projects. But I'd like to also emphasize on this, that Rotary, of course, we need the organizational aspects, but at the same time, projects. I think Salim Bhai has touched upon this one lately. And this is the time probably. Do you hear me? Yeah, carry on. Okay. This is possibly the time also to get into action, because people are now suffering and in all of these countries, and whether the daily wage laborers or small and marginal farmers or whoever, these guys are really suffering the most. So we need to see how can we be with them so that they can survive and they can get back when Corona disappears, hopefully. And one of the things, I'm an agricultural specialist, and I'm seeing, we are discussing amongst ourselves too, that because of the market system is not functioning properly, and we need to therefore work with the government so that the market system works, and the producers, small and marginal producers from the poor areas, particularly in Bangladesh and India, this is very important. I do not know much about Pakistan, but could be similar. So I feel that it's the time to be with the people, suffering people, and then with whatever resources we have, but not necessarily always we need resources, money, but also we can use our wisdom as a resource too, to advise the government and others. So I feel those projects, etc., can help us to highlight Rotary during these crises, and then as Rotary was always there, Rotary is an important contributor to World Health Organization, and so I strongly feel that that can even help us building our own confidence to be with this. I think I would like to stop there. Thank you so much. Thank you so much, Zainul Abidin. We all want to listen from all our guests from Bangladesh and abroad. And I want to I invite Dr. Anand from District 3030. Please say some Yes, word. sir. Yeah, thank you. Thank you for allowing me to take part in this meeting. And Salim sir, it is always pleasure listening you. And thank you once again. Stay home, stay safe. Thank you from my side. Okay, thank you very much. So I will now ask past President Mahiuddin Pasha, District 3281. You are welcome, sir. Past President Mahiuddin Palsh. Yes, you can speak, yes, sir. Now. Yeah, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for letting me Mohiuddin Palash. Yep, sir. This is Mohiuddin Palash from Rotary Club of Dhaka Midtown. Okay. First of all, my thanks to Salim Bhai, PDG Salim Raza Bhai, because he invited me and some of our Rotary friends in Bangladesh to join in this call, and it's a learning process and it's a very good discussion is going on, because you all are thinking to do something during the Ramadan. That is a very crucial time. And I do really agree with Salim Bhai that time that we need to very much concentrate on the basic needs. First of all, the food. Then we have to think about the rest. The health we can also think of. During the Ramadan, the health will be another issue that can be think of as well. That is what I can share with you. And I do agree with Salim Bhai that you can work out on the DDF, the balanced DDF that is going to be saved in this year, that can be utilized or maximized in this period. So let's hear from some other parts, some of our other guests, and I would like to share something if something pops in my mind. But first of all, thank you very much. Thank you for letting me join with you all.
Thank you very much. Sir, one thing, sir. Are you going to do the recording of this whole con call? Yeah, this will be, this is under recording, and you can see after 2 hours on YouTube. We have our Right. own channel, Rotary Pakistan, and you can visit every day, every discussion. Sure. Thank you, sir. Thank you. Okay. I will invite now our ladies, sisters are there. Suruhela Khan Chaudhary, I invite you. And one from Bangladesh, one from Pakistan. I will take now this side. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Can you hear? Yes. First of all, I would like to thank you all for inviting me, Past District Governor Selim Reza. I wish that our conversation will be very successful one, and inshallah we can overcome this pandemic situation through Rotary, inshallah. Thank you. Inshallah. Thank you very much. I will take Taiba Gul from Islamabad. Say some words. So now I will start conversation. Thank you very much. डीजी साहब बहुत शुक्रिया। सलीम भाई, आपने इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन का विजिट किया था। आई रिमेम्बर दोस डेज, आपकी स्पीच, I remember Sadaf Raza. हमेशा बहुत खूबसूरत। Today I am so happy to see the other my female friends from Bangladesh. I really appreciate you, and I hope so you have understand some Urdu words और हिंदी के। मगर बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। तो दिल तो हमारा करता है बांग्लादेश आए, और मेरा तो बहुत ज्यादा दिल करता है। तो प्लीज जब भी टाइम मिले, अच्छे टाइम अल्लाह करेगा आएगा बहुत जल्द, you have to visit Pakistan, and we can show you beautiful things, place, और बड़े प्यारे प्यारे लोग भी यहाँ पे, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, पिशावर, हर जगह पे। तो आइएगा, हम आपको बहुत अच्छी शॉपिंग भी करवाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज तमाम सब लोग हम इकट्ठे हैं। थैंक यू डीजी साहब once again, डीजी ताजीम, you given us this opportunity. Thank you very much. Thank you very much. It's lovely to talk to you everybody. Thank you very much. We have our senior road director and our senior leader Jalil Malik from Faisalabad. He want to ask something from Salim Bhai. Sir, thank you very much, my dear District Governor, and welcome and best wishes to all our Rotary colleagues from Bangladesh. Good to see you, good to hear you, the ideas, the wisdom, the experience of Rotary by Rotarian Salim Raza. हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसा सलीम भाई ने कहा कि हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए हम अपनी रोटरी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करें। हम रोटेरियन सिर्फ इसीलिए हैं कि हम अपनी रोटरी को कुछ ना कुछ फायदा दें। आपकी मोहब्बतों का, आपके आने का, आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू गवर्नर साहब, ओवर टू यू सर। Thank you very much, Salim. Tazim, I want to make a remark on this one. जी please carry on. भैया आप तो एक्स रोटरी एक्टर हैं। सर You are ex-Rotary actor. Sir, I am PDRR also. Okay. The strength of Bangladesh Rotary today stands on with the ex-Rotary actors. 50% of the Rotarians are ex-Rotary actors. So why don't you bring all those people who have spent 10 years in this organization, bring them to the Rotary. Rotary have given the chances to the Rotary actors very much, you know. Why don't you utilize this thing? Sir, very good point pointed out. That's why Rotary is flourishing in Bangladesh, sir. Yes. I believe Same thing you can do. This is the main reason that Bangladesh Rotarians gave the opportunities to Rotaractors to make their team, to stand with them. That's why. And you know, yesterday we elected a PDRR in Pakistan for our DG. I know. I must congratulate Adnan. And also, sir, in that year, in District 3271 of Karachi, a PDRR will also be a DG. This is the very coincidence. That's good.
that 2 PDRR will be DG in the same year, sir. Good. Nice to hear. And bring the And- rotorectors, And, not only and we PDRR, hope, rotorectors. Thank you, जलील मलिक. आपका बहुत शुक्रिया. मैं सब लोगों की ख्वाहिश है. तो I will take now Shaheen Siddiqui. Please introduce yourself and we want to listen you. Shaheen Siddiqui. Thank you. Assalamu From alaikum. Bangladesh. This is Rotarian Shahid Siddiq, past president of Rotary Club of Dhaka, the first club in Bangladesh. And I can see another colleague of my club and one ex-colleague from my club, Nurul Kabir, and another colleague, Baizid, from our club. And as you were talking about the ex-protractors inclusion in Rotary, I can say with pride that I'm an ex-protractor and I'm with Rotary movement since 1982. First, I started as a Rotaractor, and in 1991 I joined Rotary, and till date I'm in Rotary. So I believe, as Salim Bhai has said, that ex-Rotaractors can be contribute a lot in Rotary, and they're the they're big asset. And in Bangladesh, we have proved that what ex-Rotaractors can do. And not that in last 3, 4, 5 years we have made 3, 4 DGs from. Thank you. Thank you very much, sir. So I will present you another Rotaractor, Dr. Noor Zaman. Yeah, thank you. I'm really grateful, Shahid Bhai. I am the Rotaractor since 1982, the same year you were the Rotaractor, and I was Rotaractor in Dar es Salaam, Tanzania at that time. And then I came to Pakistan and I joined over here. And after our PDG Owais Buhari, he was he's senior to me as far as, and then I was past DRR in 1988-89. So it's really great to have another person from 1982, Shahid Bhai. Salim Bhai, I'm really overwhelmed to listen from you, and you are talking about the particularly when we say that the grant which is coming up for COVID-19 and these issues. I have got one suggestion that WHO yesterday have actually given certain guidelines, particularly related with the Ramadan, right? And these are related with health issues, as well as these are related with the different type of nutritional aspects, particularly so that the people should not starve. That is one side, and people should remain healthy, and they should be immune enough to actually shouldn't actually go into the infection due to COVID-19. So I think that it would be appropriate, whoever actually starts some project which is related with the COVID-19, based on the grants which are coming up for COVID-19, they should follow the same, and they should be quick enough, because we are left with 1 week now. And so far, the work which we are doing at the moment, we are actually giving up the kits, which is also essential, of course. We are giving up maybe masks, and we are giving up the sanitizers. These are, of course, these commodities are really needed. But the main issue is that majority of the population in our country, or I would say the whole region, that is Bangladesh, Pakistan, India, Nepal, and others, we have got same side of poverty indices. So keeping in view those poverty indices, we should be quick enough. We should not be wasting our time into the meetings and these things. All the district administrations, they should think about it. The directors, the international directors should think about it, and we should initiate something very much immediately, because only 1 week is left. Thank you. Thank you, Dr. Noor. Salim bhai, अगर इसका कोई जवाब देना चाहेंगे तो. यही तो हम बोल रहा है ना. We should do something together. I have already talked with the President Nominee, Director Kamal,
and they said that if you can, all of you can come together with a proposal, we can do it. And my proposal is that ask your current governors that whether they have still some leftover DDF, and we can work on that, and we can make a common program that we can work out in these 3 countries. Agree. Thank you so very much. We have from Islamabad, Shaukat Ali Muqaddam. He want to say something. Assalamu alaikum. DG Tadim Saab, mashallah, you are running this program since last week, and you are really a visionary leader. And I am Ambassador Shaukat Muqaddam. I'm the president of Rotary Club of Islamabad Metropolitan, and I'm so happy to hear PDG Salim Raza had visited Rotary Club Islamabad Metropolitan. I came to know from Tayyiba Gul. She's our... Sadaf was the president that time. She was president at that time, and she's also very, she had put a lot of efforts in the polio, fight against polio. Bill Gates had, in Atlanta convention, Bill Gates had specially mentioned a name. And we are working in our club with the, sanitizers and the food and other things, for the coronavirus. But today, when I came to know Salim Raza Saab, there was a film running in front of me. And I have studied in Chittagong St. Placid School. And my father was a captain in the Merchant Navy, then he was a pilot in the Chittagong Port Trust. And so I spent some of the best part of my life in Chittagong City. And I have still many friends, many friends still there. Some are in America, some outside. And I'm so happy to see you, sir. And there are so many other friends, our brothers from Bangladesh. I'm so happy that, there are my good memories are from Chittagong, where I studied. I don't know, I have visited once in 2009, and I had opportunity of meeting them. Some of the names, I don't know if you can recall, Ariful Islam Khan, Tariqul Islam Khan, Qudrat-e Khuda, Tanbulul Qadir Chaudhary, so many other my great friends were there. And they came all the way from Kumilla, from Sylhet, from Rajshahi, and we met at Dhaka. So, sir, will be greatly honored if you come again to Islamabad and you visit Rotary Club Islamabad Metropolitan, and all our brothers from Bangladesh, you will be most welcome to visit. Thank you so much. Thank you so much. Now I will take one of my sister from Bangladesh. I don't know the name, but the ID is 2222. Please, your mic is open. Yes. Assalamualaikum. This is Rotarian Dina RC Shahbag, running president. Thanks, DGE Tazim, for your nice introduction about our next project in Ramadan. And also thanks to Salim Raza. Thank you. Thank you very much. This is how to introduce everybody with everyone. This is what we are doing every day regularly. So now I want to invite one of my senior Rotarian, Saira Zafar, to say something. Saira. Assalamualaikum ji. Thank you, DG Tazim Ahmed, for giving me the opportunity, and thank you, PDG Salim Raza, for your thought-provoking speech. In the light of your speech, what I have extracted is that during this critical situation, we'll have to move strategically, and that strategy will be threefold. First of all, we'll have to probe into our resources, and then as far as membership is concerned, we have to see the quality of membership, and we have to engage influential people in Rotary who will be of any favor for us. And thirdly, after looking into these two things, we'll have to concentrate on focused project according to the need of our particular area right now. So in that manner, I think Rotary will be able to overcome the critical situation we are going through right now. Inshallah, I think we will be able to. Thank you so much. Good thought. Good thought. Thank you very much. Thank you very much. Salim bhai, we have something for entertainment. So I want to take a little break
to one of my singer. He want to sing something, and that is break for 2 minutes only. So then we will continue. This is in your honor, sir. So I will request Rotarian. I can't see here. So I will request Rotarian Abid Hashmi. Sir, I'm here. Okay, sir. For our friends, for our brothers, sisters. Good evening to everyone. Good evening. Good evening. So everybody's mute. All right. Because we have to take a little rest to listen this song. Then after I'll continue. Hello. जी आबिद भाई शुरू कीजिए. जी. I'm just starting. You have to prepare it before, not now. Or I will take some. All right. Actually, I was waiting for. So I will take 2 more people. Then you continue. Okay. All right. I will take 2. I will take Shireen Asad, our senior Rotarian. Let she talk, and then after we will go for to listening a song. Shireen, are you here? Okay, so no problem. I will take Aurangzeb with me. So everybody is muted. Okay, start song. हाशमी आप दे जी स्टार्ट कीजिए. जी राइट. खूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो गिला करती हैं तेरे दिल को भी सनम तुझे से शिकायत होगी मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम नगमा वफा का गाता सनम तुझसे सुनाना जाता सनम फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना खत्म बस आज ये वहशत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब कयामत होगी मेरी तरह तू आहें भरे तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे तूने सनम ढाए है सितम तो ये तू भूल न जाना कि ना तुझ पे भी इनायत होगी
आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब। थैंक यू। गुड। नाइस। अब एक दो लोगों के बाद आपको मैं लेता हूँ। ये शाहीन मयूद्दीन साहब कुछ कहना चाहते हैं। मिस्टर शाहीन जी, चेक करें। शाहीन सिद्दीकी साहब कुछ हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ जी, तो गया। Well, I just wanted to give a clap to the singer. Okay. Thank you so very much. So now we'll carry so some another introduction. Then we'll go back for the song, and we have our past president Rotarian Anwar Mumtaz Qureshi from Faisalabad, one of the biggest club in our in this city. Thank you very much, Talim Sahab, the Honorable District Governor, incoming Governor, and a very energetic and I must say a visionary District Governor, because I know you have started your preparation looking into this situation which you are going to foresee, and the amount of training you have started in this very challenging moment. I think and having an interaction with multiple district governors of India, Bangladesh, and at various places, and of course very and past district governors of Pakistan. We are very lucky that we are having a governor like you for a very good year to come. Yeah, I'm thankful to Mr. District Governor, past District Governor from Bangladesh. His talk was very informative and very informative, and he has given us a task to plan for future working in time. Thank you very much. Thank you, Captain Saab. We have Shazia Zafar, very seasoned and senior Rotarian. Please say something to our Bengali sister and brothers. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ गई? आपने अनम्यूट कर दिया मुझे? जी, ओके जी। सबसे पहले तो ताज़ीम साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने ये जो जूम मीटिंग इनिशिएट की है, इससे हमें इतना फायदा हुआ है कि घर में बैठे बैठे आपको पता है कि आजकल तो कुछ है ही नहीं करते। Hats off to you कि you have started this thing and it has changed a boring routine of life in Pakistan these days. और बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑन यू दैट। और सलीम रजा साहब ने जो बातें की हैं वो बड़ी थॉट प्रोवोकिंग हैं, और मेरे ख्याल में हमारी डिस्ट्रिक्ट इसमें काफ़ी कुछ कर भी रही है, और इंशाल्लाह हमारे रोटेरियंस इतने एनर्जेटिक हैं कि इनमें इतना हौसला भी है कि हर किस्म की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई हैव ऑल द पॉजिटिव थॉट्स regarding the pandemic. After the crisis is over, Rotarians जो है इसमें से बड़े ऐसे तरीके से निकल सके। और गाना बड़ा अच्छा था। I think we should go back to the song. And thank you for inviting me and thank you very much. In my mind. Thank you, Tazim. शाजिया, गाने पे भी चलेंगे, आपसे भी गाना सुनेंगे, और हम बंगाली में भी गाना सुनेंगे। एंड लेट मी टेक नदीम अजहर, मिस्टर नदीम अजहर। Thank you,
President, Governor-elect Tazim Yes. Saab. It is my honor that I'm having of listening to so many great personalities from Bangladesh and Pakistan. मेरे पास इनके लिए एक शेर है जो मैं इनको सुनाना चाहता हूँ. इनके लिए तो नहीं है, बट मैं इससे फायदा उठा के उनको सुनाना चाहता हूँ. वो है, जख्म देने वाला तो इस बात पे से अनजान है, जख्म देने वाला तो इस बात से अनजान है, पर उससे मिला हुआ दर्द हमारे पास है. चुभने पर कितनी तकलीफ होती है, क्या कांच को भी उसका कुछ एहसास है? Thank you very much, sir. थैंक यू सर. हमारे साथ अब है पास्ट प्रेसिडेंट महियुद्दीन पलाश, डिस्ट्रिक्ट 3281. He want to talk. Mr. महियुद्दीन Palash, if you are there, Thank you, sir. Thank you so much. I just want to, yep, sir. I'm there. Open your, so I just have one single thought to share with you. Salim Bhai, our PDG Salim Bhai can initiate one working group amongst the districts who are in Zone 1B, because this COVID-19 pandemic is not going to end very soon. The next year also we have to face a lot of post-corona issues, well, lockdown issues and health issues and so many are there. So can we come up with a working committee that will work together, join in hands between all the districts under the Zone 1B? Salim Bhai can initiate. I think if you agree all, he can initiate this working committee who can work together to come up with many ideas and the plans how we can work in our own locality. Yeah. Salim Bhai. Yes. Yes, but it depends on the governors, we are leaders are the governors, We can support the governors whenever they want us, So if you want, we can do it. Okay, sir. Thank you so very much. And we have our incoming Deputy Governor from Gujarat, Ijaz. Ijaz, आप कुछ कहना चाहेंगे, please? Galaxy A7. Ijaz Ahmed from Gujarat. Ijaz. Okay. We'll move forward. तो अभी हम एक गाना और सुन लेते हैं, because we have another 15 minutes to sum up. So उस गाना prepare करें. और इससे पहले जाहिद मजीद शाही साहब, मिस्टर जाहिद मजीद शाही हमारे असिस्टेंट गवर्नर हैं फ्रॉम चीचा वतनी. यू वांट टू से समथिंग टू आवर फ्रेंड्स? जाहिद मजीद शाही. थैंक यू डीजी तजीम भाई, ये मौका दे दिया और तजीम भाई ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट डेली की मीटिंग्स आपके अटेंड कर रहा हूँ और माइक की प्रॉब्लम इससे बड़ा सीखने को मिलता है कि जो हमारे बड़े सीनियर रोटेरियंस हैं उनसे एक मुलाकात, ये गाने एक चलो मैं इनके एक Okay, इनका there is a communication problem. Ijaz Ahmed from Gujarat. Ijaz, you want to ask something and say hello? Ijaz Ahmed from Gujarat. Okay. Abid, एक गाना गाएं. Another. This is the second last moment. जी एक बड़ा पाकिस्तानी सॉन्ग ताजीम भाई जी, कैरी ऑन.
कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारे वो समा। झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहां जहां। कभी तो तुमको याद आएंगी। तुमसे बिछड़े सदियां बीती फिर भी हमें याद आते हो। साया बन के आहट बन के आज भी तुम तड़पाते हो। जिंदगी कितनी बेजार है तुमने अभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है। कहाँ गई वो प्यार की कसमें प्यार का वादा क्या हुआ। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारे वो समा। कभी तो तुमको याद आएंगी। ये सिग्नल की वजह से स्पीकर डिस्टर्ब होता है। जितना तुमको अपना समझा इतने ही तुम बेगाने थे। हमने क्या क्या हासिल लगाई तुम इतने दीवाने थे। Thank you so much. I think you enjoyed it because this is some communication virtual problem. So with that, Salim bhai, I like to talk with Mir Arif Ali. Yeah, Mir Arif Ali, just talk, sir. Arif, you are the district trainer. Sorry? So you have a very big responsibility this year. You have to train all the district officers, district leaders, club leaders in a virtually to prepare themselves to combat with this situation. You know, Rotarians are still confused what to do, but you are the man. You can take your team and you can reach them and give them the proper guidance, you know, so that this club leadership work in the correct way. I will definitely. I mean, we just had a meeting. Can you hear me? Yeah, you can talk. We just had a meeting with. किधर गए सलीम भाई? जी, ओके बोले आप. खैर हमारी अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई है वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स के साथ और इसी ट्रेनिंग के सिलसिले में और डीजी साहब भी मेरे साथ थे और हमने ये सारा ये किया वर्चुअल प्रोग्राम का. आज उसका हमारे पास वो हमारी मिनट्स भी आ गई हैं एंड वी आर सून प्लानिंग टू होल्ड
by training all the presidents, and I mean, though we've had the pets and the thing, but we were just heading towards our district assembly. But at the same time, I'm going to share all those programs with our club presidents and incoming board members of the clubs. और उनके साथ हम वर्चुअल मीटिंग पे एक-एक सब्जेक्ट से हम करके करेंगे. और बल्कि एक और चीज जो हमने कल, हेलो, थैंक यू सर. With that, we'll go for formal vote of thanks. Khurshid Khan from Peshawar. जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. मैं ऑनरेबल एक्सेलेंसी पीडीजी सलीम रजा साहब का, कबीर साहब का और ज़ैनुल आबिदीन जो कनाडा में अभी तशरीफ फरमाए उनका, और लमंगिया साहब का, और जहाँ जो पंचकुला पीडीजी जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं चंडीगढ़ से, और हाशिम शेख साहब का, इन सब का मैं बहुत मशकूर हूँ. इतनी बड़ी शख्सियत ने आज हमें कीमती टाइम दिया और इस मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ रहे और अपनी प्यारी आवाज़ और खूबसूरत बातों से हमें नवाजा. और इसके साथ मैं अपने पाकिस्तान के तमाम पीडीजीज का शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन्होंने अपनी कीमती टाइम से हमें टाइम दिया. और मैं उस तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि अभी इस काम में मसरूफ़ हैं. और मैं ताज़ीम साहब की खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हम सबको एक कर दिया. हम सब एक हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे की आवाज़ सुन रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, और इस मुश्किल घड़ी में हमारे ये जो वक्त है इसको कीमती बनाया. और एक बार फिर मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और एक शेर भी कहता डेडिकेट करूंगा अपने मोहतरम सलीम रजा साहब को, अगर इजाजत दें सलीम रजा साहब को. ठीक है. मुझे भी पता था कि बदल जाते हैं लोग, मगर तुम्हें कभी मैंने लोगों में गिना ही नहीं. वाह वाह वाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. बांग्लादेश को अच्छा एक दफा फिर मैं सुना देता हूँ. जी सर. मुझे भी पता था कि बदल जाते हैं लोग, मगर तुम्हें कभी मैंने लोगों में गिना ही नहीं. बांग्लादेश मुल्क ऐसा है, वो हमारे भाई हैं, हम उनको और मुल्कों में गिनते ही नहीं. हम यही समझते हैं कि वो हमारे हिस्सा हैं, हमारा हाथ है, हमारा दिल है, दिल के अंदर उनकी जगह है, और हमारा मुसलमान मुल्क है, और हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा दिल अकीदत से उनका नाम लेते हैं. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आज की दिस वाज द फॉर्मल वोट ऑफ थैंक. तो सलीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू लिसनिंग सॉन्ग, वी विल टेक अनदर हाफ एन आवर. Well, I will leave with about 2 words. Convey my congratulations to Adnan and also Shehzad for being elected as a COL. Adnan, I have a common features with him. He was an ex-road director. I was also the ex-road director. His father was a past governor. My father was also past governor. So we have a common thing. So I already congratulate him. So please give him a good wish through you. Thank you very much. I will definitely tell him. And now we'll work together. We'll work together. Inshallah, inshallah. Now I formally close the meeting. And now, अगर हमारे बांग्लादेश बहन भाइयों में से कोई गाना सुनाना चाहे, तो we want to listen Bengali. If anybody want to sing a song in Bengali, anyone अजीम साहब, मैं जरा एक बात करना चाहती हूँ. आप किधर थी? आप पहले थी नहीं. आप मेरा थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम जी. नहीं, चले आप कहना चाहते तो आप कह दीजिए. नाउ इट्स फॉर्मली ओपन. और अगर गाना हाँ जी, थोड़ा सा मैं सलीम रजा साहब से I just wanted to request something. कितने बुखारी रजा सलीम भाई he left already. अपनी दूसरी मीटिंग में उनको जाना था. बाकी आप अपना मैसेज देना चाहें तो दे दें. हमारे और साथी बैठे हुए हैं. हाँ जी,
बांग्लादेश से अगर हैं, first of all I would like to welcome them. बड़ा अच्छा लगा to see our friends from the neighboring country. I had one very important point for Bangladesh. I just heard a news on ARY News today that over 300 Pakistani students studying in Bangladesh under the SA Quota Scholarship Program are being. थोड़ा सा अगर if you can kindly, it's a very important point. अगर mute कर दें बाकी लोगों को. I'm specifically addressing my Bengali fellow Rotarians. I hope कोई है अभी मौजूद है from Bengal. Yes. You're listening to me. My name is Magul. I'm a Rotarian from the same district, past president and past assistant governor. I just wanted to draw your attention towards over 300 Pakistani students studying in Bangladesh who are stuck in your country. And I was really shocked to see the news on television today that they are in very miserable condition and they hardly have access to bread and biscuits only. They're surviving since many days on bread and biscuits only, and they are crying out for help. So what do you think if Rotarians there in Bangladesh could do something about them? It's all thing. It's very much needed and required. That would be a great project if they can extend their cut. I think Bezaz want to say something. Yeah. माइक खोल दे इनका, बेजाज साहब का. किधर बेजाज? जी सर, इनको हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनका माइक खोल दे. माइक उस तरफ से बंद है. सर आप खुद खोलें. Yes, Assalamu alaikum. This is Rotarian past president Bazid. I'm a member of Dhaka Rotary Club. If you could please give us any contact of those students, we will take care. Thank you very much. Magul, your mic is Magul. Okay, speak Magul. I was talking and I don't know, my mic was muted. मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है. I was addressing my fellow Rotarians from Bangladesh, and I was requesting them to do something about those students who are stuck there and they are crying out for help, and they hardly have any access to their health care and for food also. well, अभी उन्होंने जवाब दिया है. जवाब दिया है कि आप टेलीफोन नंबर दे दें किसी का, they will take care of them. In fact, sir, I don't have any direct access to the students. It was just a suggestion and a request that if you could contact the concerned people and you could take care of them. So we will, I think at large, the whole, both the districts and the Pakistani nation would be very grateful to you. That would be a great work from your side. Abid Hashmi sahab, ab aapki bari hai. This is your term, sir. Mike. मेरा ख्याल है कुछ कहना. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा.
हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ।